So, dear students, हो हो आहे. नाही, मी मेसेज टाकला होता ग्रुपवर, पाहणं नाही झालं. येस आहे. So, dear students, today I am taking a revision of your next chapter, that is heat chapter. Okay, chapter heat. So, heat is the form of energy which can be transferred from a part of a system having higher temperature to the part of system having a lower temperature. So understand the first point. Heat always flows from high temperature to low temperature, and heat energy can do many things. We use heat energy to boil water, cook food, to keep us warm. So heat is the form of energy. So suppose we have a hot liquid with us. In order to make it cool, we add a cool substance, for example, ice. So when we add a cool substance to hotter substance, cooler substance become hotter, and hotter substance one become the colder. So both attain the temperature in between them as their initial temperature. So heat always transfer from hotter body to colder one. So heat always कैसे transfer होती है from hotter to colder one. Okay, hotter to colder one. Heat always transferred from hotter to colder one, or heat energy always transferred from high temperature to a low temperature. Okay, heat energy कैसे ट्रांसफर होती है from high temperature to a low temperature. Now next one, that is thermal expansion. So thermal expansion is the tendency of metal to change its length, area, volume in response to temperature. So next point, that is thermal expansion. Next point is thermal expansion. Thermal expansion. Next point is thermal expansion. The meaning of thermal is heat, okay, or temperature. The meaning of thermal, that is a heat or temperature. So when we give the heat to the any substance, that substance are expand. ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको हमने हीट दिया, सब्सटेंस क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं. सो द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल increases and expanding the material. The expansion rate varies with the material. My point is, when we give the heat any substance, that substance are expand. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है, आपने हीट किया, एक्सपांड हो जाता है. लिक्विड है, हमने हीट दिया, एक्सपांड हो जाता है. गैस है, हीट दिया, एक्सपांड हो जाता है. सो व्हेन वी गिव द हीट टू द सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस क्या होता है, दैट इज द एक्सपांड. नाउ ये जो एक्सपांशन है किसके ऊपर डिपेंड है, type of material. So there are the two type of material, good conductor of heat and bad conductor of heat. So मैंने good conductor जो है metals are good conductor of heat and show high rate of expansion. मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. व्हेन वी गिव हीट टू एनी मेटल, मेटल क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं. सो द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये जो थर्मल एक्सपांशन है
इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सो कॉमन एप्लीकेशन इज thermometer. Okay, so thermometer is a device which work on the thermal expansion. थर्मामीटर है, हमारे बॉडी के हीट की वजह से थर्मामीटर में जो लिक्विड है मर्क्यूरी वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है. सो थर्मामीटर किसका एग्जाम्पल है? दैट इज थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन का एग्जाम्पल है थर्मामीटर. Then a gap is created between the railway lines. जो रेलवे लाइन्स है उसमें गैप होता है. सो व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन रेलवे लाइन्स? बिकॉज वो जो है मेटल के बने होते हैं एंड हीट की वजह से मेटल क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं. सो हमने गैप नहीं रखा तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाएंगे एंड चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. दैट्स वाई रेलवे लाइन जो है उसमें गैप होता है टू अवॉइड द थर्मल एक्सपांशन. व्हेन ट्रेन passes over a track, large amount of heat is produced. ट्रेन भी जब ट्रैक के ऊपर से जाती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है. सो इफ देर आर नो गैप, क्रैक will form on the track due to thermal expansion. So thermometer, then gap between the railway track are the some application of thermal expansion. Now next one, temperature. Temperature is the measure of degree of hotness of the object. Temperature is measure of degree of hotness. Okay, now next one, that is temperature. This temperature is measure of degree of hotness. टेम्परेचर क्या करता है? एनी सब्सटेंस हाउ मच हॉट और हाउ मच कोल्ड. टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. If the object having higher temperature than its surrounding, it means that object is hotter than the surrounding. If it having the lower temperature than its surrounding, then it shows that object is cool than the surrounding. So कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, कूल है, हम किससे कंपेयर करते हैं? उसके सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं. So how we can measure this temperature? So temperature of an object is measured by the instrument, or temperature is measured with the help of thermometer. Temperature of an object is measured using a thermometer. Temperature हम किससे measure करते हैं? Thermometer. There are the different type of thermometer. This thermometer work on the expansion and contraction. थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज होता है एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ ये जो थर्मामीटर है, इन दैट थर्मामीटर टेम्परेचर इज मेजर इन द 3 unit: डिग्री सेल्सियस, Fahrenheit and Kelvin. Which are the 3 units to measure the temperature? So there are the 3 units to measure the temperature: degree Celsius, next one Fahrenheit, and next one is Kelvin. Okay, so 3 units to measure the temperature. So degree Celsius, it is also called centigrade. It is defined as on the basis of freezing and boiling point of the water. So freezing point of the water is considered to be taken as the temperature of 0 degree Celsius, and boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. So there are the separation of 100 division between the freezing point and boiling point of water in Celsius. Thus division or degree on the Celsius scale is 1 divided by 100 interval between them. So first one, that is
degree Celsius. This is the degree centigrade. This is the first unit to measure the temperature, कि जिसमें 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है. नाउ Fahrenheit, the freezing point of water is considered as, देखो ये जो डिग्री सेल्सियस में जो थर्मामीटर है उसकी स्टार्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस है एंड ईच लाइन प्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसके ऊपर जो लाइन है ईच लाइन क्या प्रेजेंट करती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट करती है. नाउ Fahrenheit स्केल. सो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ओके, सो 100 डिग्री सेल्सियस आहे ना. आईना बोला ना. नाही का? नाही का त्या घरी? आई नाही का? बर. Now next one, that is Fahrenheit scale. Freezing point of water is considered 32 degree Fahrenheit. सांगा किती पण. Okay, 32 degree Fahrenheit. This is the freezing point of water, and then 212 Fahrenheit. This is the boiling point of water. So 32 degree, that is the freezing point of water, and 212, that is the boiling point of water. So the interval between the freezing point and boiling point of water in the Fahrenheit is 180. Here interval is 1 divided by 100 lines. Here 1 divided by 180. Here there are 180 lines are present between 32 to 212 Fahrenheit. Now third scale, that is the Kelvin. It is the SI unit of temperature. Suppose in your exam there is a question, so it is the SI unit of temperature. क्या है? टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन. नाउ इन दिस केल्विन्स, boiling point of water, first one freezing point 273. Suppose this one is the Kelvin thermometer 273 and 373 is the 273.15. 273.15 and next one 373.2 Kelvin. Okay, 273 कंसिडर करते हैं and 373. So in between them there are 100 lines are present. So lower fixed point of the Celsius, Fahrenheit, Kelvin scale. So this one 0 degree Celsius, 32 degree Celsius, 273. This one is the lower fixed point. Every thermometer. Now upper fixed point 100 degree Celsius, 212 and 333. It is the upper fixed point. जो lower fixed point होता है that is called ice point, and जो upper fixed point होता है that is called steam point. Now to thermometer, we are using the thermometer to measuring the temperature. थर्मामीटर के भी टाइप होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर. सो फर्स्ट वन क्लिनिकल थर्मामीटर. what is the range of clinical thermometer? 35 to 42 degree Celsius.
So the range, okay, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये क्या है, टेम्परेचर के यूनिट्स की रेंज, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट. नाउ next one, that is type of thermometer. So first type of thermometer. Next one is thermometer. So first one is clinical thermometer. Then next one is lab laboratory thermometer, and then next one is digital thermometer. Next one is sixth, or it is also called maximum minimum thermometer. Maximum minimum thermometer. So those are the different type of thermometer. ये thermometer के अलग-अलग type हैं. So first one, clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure the body temperature, and a human body normal temperature is 37 degree Celsius. Now ये जो clinical thermometer है उसमें ranging कहाँ से होती है, 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Clinical thermometer 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, and thus clinical thermometer has the range. This is the range for the clinical thermometer. Now next one, laboratory thermometer, minus 10 degree to 110 degree Celsius. Laboratory thermometer which are used in the laboratory, minus 10 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस. -10 डिग्री से स्टार्ट होके 110. it is used in the science laboratory to measure the temperature of the different liquid, different substance. सो थर्मामीटर, थर्मामीटर में मर्क्यूरी लिक्विड यूज होता है. मर्क्यूरी हैज अ लार्ज यूनिफॉर्म एक्सपांशन, that's why mercury is used. Does not stick to glass easily, we can easily see the mercury, that's why mercury is used in the liquid thermometer. Now clinical thermometer and laboratory thermometer में क्या difference है? In the clinical thermometer, जो clinical thermometer में suppose this one is the mercury, ये mercury है, यहाँ पे एक ऐसा बेंडिंग होता है, and that bending is called kink. ओके, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, किंक. ओके, सो दिस वन इज द ग्लास, वहां पे बेंडिंग है, यहाँ पे मार्किंग है, सो किंक होता है. सो देयर इज अ किंक in the clinical thermometer so that mercury level does not fall easily. Alcohol is the another liquid which is used in the thermometer, that measure very low temperature because it freeze at lower temperature compared to mercury. कोई कोई थर्मामीटर में अल्कोहल भी यूज करते हैं. ओके, दिस अल्कोहल फ्रीज एट much lower temperature as compared to mercury. And there are also solid and gas thermometer, which are designed for the special range. सॉलिड वाले भी थर्मामीटर होते हैं, कोई थर्मामीटर में गैस में भी गैस यूज होता है. सो इट इज फॉर द स्पेशल range. A digital thermometer, nowadays we are using the digital thermometer and it directly shows the reading, no need to calculate the lines. Okay, so a least count of measuring the device is defined as minimum value we can measure, that is called least count. कोई भी substance का suppose आपने बीकर लिया, उसका least count होता है. देन मेजरिंग सिलेंडर, उससे हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. नेक्स्ट वन इज हीट इज ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ हीट.
So we have seen the different type of thermometer. So first type of thermometer, yes, Srishti. Second type, okay. Third type. Now, note down the formula for the conversion. Okay, so ये जो 3 unit है, they are interconvertible. You should know the formula of the conversion. Suppose आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस and convert it into Kelvin. Okay, so Kelvin में convert करना है. So any temperature in degree Celsius plus 273 हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर किसका रहेगा? केल्विन. ओके, अंडरस्टैंड. एनी टेम्परेचर जो कि किस में है? डिग्री सेल्सियस में. सो यहाँ पे क्या आएगा? 25 प्लस 273. ओके, केल्विन प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 273. नाउ आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है एंड आपको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है. सो सपोज दिस वन इज द फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है एंड आपको जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज सेल्सियस में दिया है. सो डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 30. फॉर्मूला रिमाइंड कर लेना है. ओके, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32. नाउ आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट में दिया है बट आपको सेल्सियस में निकालना है. ओके, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर ऑलरेडी दिया है. सो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 into 5/9. So these three formulae you have to keep in mind because there are questions in your school exam also, Olympiad also, based on this calculation. So डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, कोई भी सेल्सियस का टेम्परेचर जो गिवन है यहाँ पे पुट अप करने की वैल्यू इंटू 9/5 प्लस 32. नाउ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू दी है -32 इंटू 5/9. ओके, क्लियर? चलो, वेरी गुड, गुड एंड वेल. आपको फॉर्मूले लर्न कर लेना है. नाउ नेक्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर. So how heat is transferred? Heat is transferred by the three-way, that is conduction, convection, and next one is radiation. Heat is transferred by the three-way. Heat transfer के three-way है. So first way, that is conduction. Second way, that is convection, and third way, that is the radiation. So three ways: conduction, convection, and next one is radiation. It is transferred by the three-way: conduction, convection, and next one is radiation. So the process of transfer of heat from hotter end to colder end of the body without movement of the particle is known as conduction. Heat is transferred. Okay, so first point in the conduction, heat transfer होती है from hotter end to the colder end. Transfer from hotter end to the colder end.
So first way, that is conduction. Heat is transferred from hotter end to colder end without movement of molecule or particles. That is known as conduction. Conduction में जो particle है, molecule है, do not leave their place. अंडरस्टैंड, जो पार्टिकल है उसकी प्लेस नहीं चेंज करता है. दिस पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर ओन प्लेस. सपोज दिस वन इज द कॉपर प्लेट. ओके, मैंने यहाँ पे इसको कैंडल से हीट दी. सो दिस वन इज द कॉपर मॉलिक्यूल. दिस मॉलिक्यूल डू नॉट लीव्स देयर प्लेस and heat is passed from hotter end to colder end. So molecule just vibrate on their position, mean position, and give the energy to the neighboring particle. Molecule सिर्फ vibrate होता है and give the energy to the neighboring particle. Do not leave their place. In solid, generally heat is transferred by the conduction. So जो सभी solid है, सॉलिड में हीट कौन से वे से कंडक्ट होती है, दैट इज द कंडक्शन. सो ड्यूरिंग द इन सॉलिड हीट इज, सभी सॉलिड में हीट कंडक्शन से ट्रांसफर होती है. नाउ इन दिस मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर प्लेस. They vibrate on their own place and give the energy to the neighboring particle. That one is also vibrate, give the energy to the neighboring particle, and the process is continue and heat energy is transferred from hot end to the colder end, and the process in which molecule do not leave their place but heat is transferred, and such condition is called conduction. So this is depend on the material. गुड कंडक्टर है, हीट फास्टली कंडक्ट होगी. द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सो हीट उनमें से इजीली पास हो जाती है. Then bad conductor, the material which do not conduct the heat, they are called bad conductor of heat. Bad conductor में से heat transfer नहीं होती है. So air is a bad conductor. Then wood है, rubber है, plastic है, bad conductor है. Bakelite, mica, these are also bad conductor of heat, कि जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है. नाउ सेकेंड वे ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द कन्वेक्शन, कि जिसमें से हीट ट्रांसफर होती है. हीट इज ट्रांसफर बाय थ्री वे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. सो नेक्स्ट वन, दैट इज कन्वेक्शन, the process of heat transfer in which molecule of the liquid or gas move to carry the heat energy from hotter end to colder end. यहाँ पे molecule, actually molecule क्या होते हैं, molecule leave their place, but conduction में do not leave their place. Molecule leave their place and form the current, and that is called convectional current. Suppose we have given the heat to the water, so lower part is hotter region and upper part is colder region. So heat moves from hot to the cold region, and molecules leave their place. जो bottom के molecule है upper side जाते हैं, upper के molecule lower side आते हैं. So molecule actually leave their place. So when water is heated, the water near the flame is hot and which rises up, and the cold water which down toward the source of heat, and the process is continue until the whole water get heat up. So convection of the heat give rise some interesting natural phenomenon. कन्वेक्शन की वजह से कुछ नेचुरल इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होते हैं. फॉर एग्जांपल सी ब्रिज is the because of convection, land bridge is because of convection. ओके, सी ब्रिज है, लैंड ब्रिज है, दोनों कन्वेक्शन की वजह से होते हैं. देन नेक्स्ट वन,
दिस कन्वेक्शन जो है लिक्विड गैस में होता है. सो कन्वेक्शन gases में होता है. Molecule actually give their current and they form the convectional current. Trade wind say it is also the part of convection. Now next one, that is, now see here in case of conduction, conduction होने के लिए metals लगते हैं और good conductor of heat लगते हैं. Medium is necessary. What about the convection? Medium is important है क्या? Yes, medium is necessary. Now, what about the radiation? Medium necessary है? No, medium is not necessary. So next one, third way of conduction of heat. Another way to conduct the heat is transfer directly from hotter to a colder body without any medium. So heat directly pass from hot body to the cold body, but medium is not important. No medium is important. Heat received from the sun reaches to us without any medium, and that one is called radiation. And radiation is the only process of heat transfer which takes place विदाउट एनी मीडियम, कि जिसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है. हीट एनर्जी इमिटेड बाय द हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एनी हॉट बॉडी है उससे हीट रीच होती है, बट ये जो हीट है कौन से फॉर्म में होती है? वेव फॉर्म में होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. And it is the fastest mode of transfer of heat. Conduction convection से भी fast कौन सी है? Radiation, because waves are in the form of electromagnetic waves. Now ये जो radiation है जो solid substance में भी होता है, liquid substance में भी होता है, and gaseous substance में भी होता है. All hot object, solid है, liquid है, gas है, emit the radiation, and when radiant energy fall on the object, some amount of heat energy some amount of heat energy is absorbed, some amount of heat energy is reflected. तो जब रेडिएशन होता है, तो ये जो हीट एनर्जी है, सम ऑफ द हीट एनर्जी इज absorbed and some of the heat energy is reflected. Okay, कुछ heat energy absorb होती है and heat energy reflect होती है. Reflect means when light fall on any shiny surface, bouncing back of light, that is called reflection or a reflection of the thing. Now again जो dark color है वो हीट को absorb करते हैं. That's why in winter season we wear the डार्क कलर क्लोथेस. एंड व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है. व्हाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट most of the heat radiation following on that. So radiation of heat is observed in our many day to day activities. Hot utensil uh, kept away the flame, cool down, radiate the heat energy to the surrounding. Okay, anything when we cook that substance, जो utensil है, when you kept your hand near that utensil, you feel the heat energy by radiation. Any warm object है, आपने उसके पास आपके hand रखे, you realize the heat because of the radiation. Okay, फायर है, फायर के हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हमें रियलाइज होती है हीट बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस. So heat energy is
transfer by conduction, convection, and radiation. Now, the science behind the clothes. We are using the clothes, but behind that there is the science. So, dark color are the good absorber of heat, and light color are the good reflector of heat. So, in summer season, we wear the light color clothes because it reflects the heat. Okay, yes, class. Okay, and winter season we wear the dark color clothes because absorb the heat. Now, change of state. When we give the heat to the solid, it change into liquid. When we give the heat to the liquid, it is changed into gas. So solid substance है उसको हमने हीट दी उसका लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट देन लिक्विड सब्सटेंस है उसको हीट दी दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट देन नेक्स्ट वन ओके अंडरस्टैंड सॉलिड है उसको हीट दी लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग लिक्विड है हीट दी गैस होता दैट इज बॉइलिंग पॉइंट देन we supply the heat like this we remove the heat also हम substance में से heat remove भी करते हैं okay when we give the heat temperature increases when we remove the heat temperature decreases clear is it okay my dear students Yes, ma'am. Yes, teacher. okay so here I have taken a revision of your heat chapter okay Good evening, ma'am. bye bye Shaurya why you joined late Ma'am, my phone was switch off. okay That. okay I will share Excuse me, ma'am. okay Okay. Excuse me, ma'am. बेटा तुम्हारी बैच मैंने बोला ना ऑलरेडी 7 को है एक्चुअली मैं 10 मिनट्स लेट स्टार्ट करने वाली हूँ अर्नव इज इट ओके Yes. चलो बाय बाय Ma'am.